Assalamualaikum. My name is Anam Javed and my registration number is 16T82. This is lecture number 4 of Digital Signal Processing. In this lecture, we are going to cover the following topics. Number 1 is the linear system examples. What are flipping or mirror systems? What is sinusoidal fidelity? What is compression and expansion? And the last thing is order holds. Uh, Now come with the linear system example. What are the linear system examples? In the previous lecture we have learned about what is a linear system. It is basically a system that obeys superposition theorem, which involves homogeneity and additivity. So now we will discuss few examples. When exponential power is less than 1, system is linear. मतलब कि जब भी हमारे पास पावर एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास 1 होगी या 1 से लेस होगी तो उस सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम बोलेंगे। कैसे? इसकी एग्जांपल इस तरह गिवन है कि इफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर 2 है, मीन्स x की पावर यहाँ पे 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इस सिस्टम को हम नॉन लीनियर सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है y इक्वल्स टू 2x, यहाँ पे हमारे पास x की पावर जो है 1 है, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर सिस्टम बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में भी हम इसको लीनियर सिस्टम ही कहेंगे। अगला केस हमारे पास है y इक्वल टू x ऑफ n मल्टीप्लाइड विद w ऑफ n, ये नॉन लीनियर सिस्टम है। नॉन लीनियर सिस्टम क्यों है, आगे रीजन लिखी हुई है। पावर तो यहाँ पे 1 है, बट जब एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो नॉन लीनियर सिस्टम होगा, उस सिस्टम को हम नॉन लीनियर बोलेंगे। ये हमारे पास ग्राफ्स हैं लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शंस के या सिस्टम्स के। अब हम देखेंगे व्हाट इज मिरर और फ्लिपिंग सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है मिरर और फ्लिपिंग, मीन्स कि ये वैल्यूज को रिवर्स करके हमारे पास दे देगा। हमारे पास ये सिस्टम गिवन है y ऑफ n इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n, यहाँ माइनस n इंडिकेट कर रहा है इनवर्स को या रिवर्स, और फ्लिप कर रहा है या मिरर दे रहा है इसका। इनपुट वैल्यूज हमारे पास क्या गिवन है, x ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, -1, 0, 3, 1, -1, 2, 1 एंड 3। ये 0 के नीचे लाइन क्या इंडिकेट करिए, दैट इज इट इज 0 इंडेक्स। यहाँ पे x ऑफ n यानी n की वैल्यू यहाँ 0 है, और इस साइड पे जो है नेगेटिव वैल्यूज है और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू है। ये 0 इंडेक्स है, इसके फॉरवर्ड पॉजिटिव वैल्यू है और उसके बैकवर्ड पे हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 इंडेक्स है, 5, 6 एंड दिस इज -1 इंडेक्स, दिस इज -2 इंडेक्स, बट हमारा 0 इंडेक्स कहाँ पर है, ये है। ठीक है, अब हम साइमल्टेनियसली n की वैल्यूज वेरी करेंगे और अपने सिस्टम के इनपुट पे सिस्टम के आउटपुट पे इसका इफेक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हमने n की वैल्यू 0 पुट की, n की वैल्यू 0 पुट करने से x 0 हो गया, तो हमने देखना है x की वैल्यू 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे हमारे पास x ऑफ n की वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ पे भी 0 ही आ गया। नेक्स्ट हमने n को वेरी किया -1 पे, यानी y ऑफ -1 लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में -n गिवन था, दैट माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। अब हमने देखना है x ऑफ n, मीन्स के 1 इंडेक्स पे x की क्या वैल्यू है। 1 इंडेक्स पे हमारे पास x की वैल्यू 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। The next value of n is taken as -2, -2 लिया तो यहाँ पे हमारे पास +2 आ गया, बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास -n गिवन था, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, यहाँ पे 2 हो गया। अब हमने क्या देखना है, 2 इंडेक्स पे x की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2 इंडेक्स पे x की वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। जब n की वैल्यू -3 होगी तो यहाँ पे x ऑफ 3 बन जाएगा, मीन्स एट इंडेक्स 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इंडेक्स 3 पे हमारे पास x की वैल्यू है -1, सो हमने यहाँ पे -1 लिख लिया।
एंड सो ऑन। आगे भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। -4 होगा तो यहाँ पे x(4) आ जाएगा, मीन्स 4th इंडेक्स पे x की वैल्यू 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी 2 लिख लिया। Then next is -5. If there is -5, then the system will become x(5). x(5) means at index 5 what is the value of x? इंडेक्स 5 हमारे पास x की वैल्यू 1 है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह 6 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए हमने वैल्यूज निकाली हैं, तो हमारे पास x(6) पे 3 था, x(-1) पे -1 था एंड x(-2) पे 2 वैल्यू थी। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, हमारा सिस्टम इस तरह का बन जाएगा। कैसे लिखेंगे? हमने 0 से स्टार्ट करना है, 0 इंडेक्स, जैसे ही वैल्यूज आई हैं उसी ऑर्डर में चलना। 0 के लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यूज एंड 0 के राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज, बिकॉज हमारा 0 जो है एज एन इंडेक्स इंडिकेट हुआ हुआ यहाँ पे। 0 पे 0 इंडेक्स इज हेयर, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी और यहाँ पे है नेगेटिव वैल्यूज जो हमने अभी फाइंड की हैं। अगर हम इस सिस्टम के रिस्पॉन्स को और इस सिस्टम के रिस्पॉन्स को आपस में कंपेयर करें तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर हैं, इन्वर्स होकर आए हैं। मीन्स कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई थी, अगर हम उनको इस डायरेक्शन में लिख दें तो हमारे पास ये वाला सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास मिरर और फ्लिपिंग सिस्टम की एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास है साइनोसाइडल फिडिलिटी, मतलब कि साइनोसाइडल फिडिलिटी होती क्या है। अगर हम सिस्टम को एक साइनोसाइडल वेव प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रोसेसिंग के बाद जो भी आउटपुट देगी वो भी साइनोसाइडल वेव ही होगी। उस वेव का एम्पलीट्यूड और फेज तो वेरी कर सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मीन्स कि अगर हमने 20 किलो हर्ट्ज की इनपुट साइनोसाइडल वेव एक सिस्टम को प्रोवाइड की है तो हमारे पास आउटपुट पे भी 20 किलो हर्ट्ज की साइनोसाइडल वेव ही जनरेट होगी। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। अगर हम कॉन्टिन्यूस सिस्टम में ऐसा साइनोसाइडल वेव पास करेंगे तो आफ्टर प्रोसेसिंग वो एक साइनोसाइडल वेव ही आउटपुट पे प्रोड्यूस करेगा। और अगर हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम है तो वो डिस्क्रीट साइनोसाइडल वेव के सैंपल्स लेगा और फिर डिस्क्रीट साइनोसाइडल वेव के सैंपल्स ही आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। ये थी हमारे पास साइनोसाइडल फिडिलिटी। अब अगली चीज़ जो हमारे पास है वो है कंप्रेशन और एक्सपेंशन। कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए भी हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम गिवन है और उसकी इनपुट रेंज ये गिवन है। ये हमारा 0 इंडेक्स है, 0 के नीचे अंडरलाइन इंडिकेट करिए 0 इंडेक्स है। 0 है, ये 1 2 3, दिस इज 4th इंडेक्स, 5 6 एंड लेफ्ट साइड पे 0 के हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी इंडेक्स की, दिस इज -2। अब हमने इसको सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल लिखी थी और बिल्कुल सिमिलरली इसको में भी हम साइमल्टेनियसली वैल्यूज पुट करेंगे, वेरी करके n की वैल्यूज को इनपुट इंडेक्स पे उसकी वैल्यूज के इक्वल लिखेंगे। सबसे पहले हमने n को 0 पुट किया, n को 0 पुट करने से x(2n) भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ n 0 होगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर 0 आ जाएगा। अब इस x(0) का क्या मतलब है कि हमने 0 इंडेक्स पे x की वैल्यू देखनी है, इस सेट पे से, जो सेट पे गिवन है यहाँ से देखिए। सो x(0) हमारे पास 0 गिवन है, यहाँ पे 0 आ गया। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ n equals to 1, 2 is multiplied with 1 and this will become x(2). Now we have to see what is the value of y, what is the value of x of n at n equals to 2, means हमने 2 इंडेक्स पे x की वैल्यू चेक करनी है। 2 इंडेक्स पे हमारे पास 1 था तो यहाँ पे 1 आ गया। Then we have put the value of n equals to 2. When n is equals to 2, this will become x(4n). क्यों ये x(4n) क्यों बन गया? Because when we vary this n,
n is varied to 2. 2 multiplied by 2 is 4. This will become x of 4. Now we have to check the index 4. What is the value of x at index 4? At index 4, its value is 2. So we write here 2. The next thing is we have taken n equals to 3. Now when n is equals to 3, this 3 is multiplied with this 2 according to our system equation. 2 into 3 is 6. Now we will check at index 6 what is the value of x. Its value is 3, so we write here 3. Now we have put in the value of n equals to -1. This -1 is multiplied by 2 and here it is written as x of -2. Now we have to check the value of x at index -2. At -2 its value is 2, so we write 2 here. And at last we have put in n equals to -2. This -2 is again multiplied with this 2 according to the system equation, and it will become -4. We will have to check the value of x at index -4, and -4 is not in the system input equation, so when it does not exist we will take it as 0. Now we have to write a final equation of the system, that is y of n equals to, keeping in mind the 0 index, we will write our equation. We have to write positive values here and negative values here. At index 0 its value is 0, so we write 0 here. Now at y equals to 1 its value is 1. 1 positive 1, so its value is 1. We will write it on the right side, 1. At 2 its value is 2. At 3 its value is 3, and at -1 its value is 2. So writing it accordingly. What is the next step? This indicates compression, how it is compressing or how the system is compressing. Now again look at the system. This is our system. Y of n equals to x of 2n. Here multiplication with 2 indicates that our system is compressed 2 times. How it is compressing? This is our 0 point. Now if we have to directly indicate the compression, we will take the next 2 samples, the next 2 values, because our system is compressing 2 times due to the multiplication with a constant that is equals to 2. This is 0, 1 and 2, means this 1 is going to be included in our system here. 3 is ignored. Then again we have to count 2 times because of the compression. 1, 2, and this 2 is included in the system. Again we have to compress it 2 times, so counting again 1 and 2 means this 3 is going to be included in the system. Now same goes for the left side of the 0 index, counting from here 1 and 2, means -1 will not be included, but this 2 is going to be included because of the compression that is equal to the 2 times 1 and 2. And this is our 0 point. Hence it shows the compression. System is compressed 2 times. Left and the right values of the 0 index are compressed 2 times. The next example is of the expansion. Here the system is y of n equals to x of n divided by 3. In the previous example we have seen the multiplication with 3, and now here it is divided with 3. Multiplication indicates compression and division probably indicates the expansion.
similar values or set of inputs for this system. And again we have vary the value of n and find the value of output, that is y of n, at the different indexes. This is 0 index, this is 1 index, 2, 3, 4, 5, 6, and on the left side this is -1, this is -2. Similarly, by putting the value of n and by observing its response on the system, we have defined the index values here from this point to this point. The calculation or the method that I have previously explained is going to be followed here. The system after processing will become like this. What I told you earlier, that division indicates expansion, and here the factor 3 is involved. This means that our system is going to expand 3 times. Means we are going to expand our system 3 times. Starting from the 0 index, we will expand it 3 times by adding zeros, as our calculation indicates. This is zeros index and 2 zeros here, then again a value, then again 2 zeros, then again a value, then again 2 zeros, then again a value, and this goes on the left and on the right side as well. As this is 0th index, our system is expanding 3 times, so 1, 2 and 3, means at 3 n equals to 3 there will be a value, and again we will count it as 1, 2 and 3, again a value, and so on. This is the example of expansion. The next thing is 0 and first order. What is 0 and first order? Here is a graph of previously calculated compression or expansion of the system. We have drawn the spikes according to our input and observing its effect by varying the value of n. What is 0 order? In 0 order, basically there is a rectangular waveform, because 0 order retains hold from point to point values, and first order is the derivative. It only takes 2 points and shape obtained is triangular. These rectangles shows the 0 order starting from here and to the next point, like this and then like this. We have constructed our signal to a rectangular form. This shows the 0 order derivative. Now why we are taking the 0 order derivative of first order or second order? Because in DSP most of our signal are in discrete form, so we want to make or present it in a better way so that we can convert them into continuous signal to retain the shapes, to retain the information. And in first order Hall, the waveform that we obtain is of triangular form, like means if we join these points in a rectangular manner, in a triangular manner. Like this. In first order, the shape of the signal will be a triangular waveform, a rectangular waveform, and by applying the first order Hall, the shape is changed to the rectangular because it indicates the derivative. It shows the reconstruction of the signal. Now if we apply the second order Hall will give a curve, a more precise signal, because it is a second derivative that will retain the difference of two values
if three of the points are given. This is all about the lecture number 4. Thank you.